Hi guys, what's up? Uh, I'm a little excited today because I now have a new laptop. Yay! So मेरा भी birthday था 2 दिन पहले and my family gifted it to me. It's the MacBook 2019, MacBook 2019, MacBook Pro, and it's quite nice. मैं भी सुबह से experiments कर रहा हूँ कि कैसा है laptop, and I'm liking it quite a lot. एंड इट्स रियली नाइस. सो मैं आज आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ जो मेरे होम पेज पे होती है. आई थिंक मैंने ये आपको पहले नहीं बताई हुई. आप लाइक आई हैवंट टोल्ड यू गाइस अबाउट दिस वेबसाइट पहले, बट इट्स अ ग्रेट वेबसाइट एंड इट्स द काइंड ऑफ अ वेबसाइट दैट यू शुड कीप ऑन योर होम पेज. तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सो लेट मी शो इट टू यू गाइस and let's do this. So I'll share my Safari with you. मैं अभी इस पे Safari चला रहा हूँ, ठीक है. Hi Filmy Funda, hi Vikas, how are you guys? So guys, the website is called fucking homepage. ये बहुत ही तोड़ू वेबसाइट है एंड ये आपको रोज के 5 लिंक्स देती है रैंडम अलग अलग चीजों के. And there is some wisdom every day, there is some great pictures every day, there is a great book every day. So ये 10 अलग जगह redirect करते हैं. These are like a mixture of recommendation plus educational stuff plus और इसकी खास बात ये वर्ड जैसे यूज करते हैं. It's a fucking Monday, unfold the history of goddamn universe, like very aggressive words, but it is a highly मतलब informative website. So जैसे words of wisdom of the fucking day तो ये fucking word हर जगह use करते थे. Don't hang around people who are constantly starting drama. Educate your ignorant ass. The motherfucking constitution explained. तो I'm sure ये US का constitution का कुछ होगा, but still let's see इसमें क्या है. So अब like it has redirected us to this website called unconstitution.net. And अभी यहाँ पे पूरा constitution explain किया है. The third one is unfold the history of the goddamn universe. Sometimes ये वाले links चलते नहीं है because ये again एक second ना. हाँ ये आपको हाँ so okay चल गया. So it's called the big history timeline wall book, unfold the history of the universe. And और देखते क्या है. One second. हाँ toast your shit. So अब अगला है useful shit for the goddamn day. So useful shit for the goddamn day में इन्होंने समझाया है कि टोस्ट कैसे करते हैं अपनी ब्रेड को ढंग से. और like you can buy it. कितने रुपए का है? $349. Revolution cooking R80 high speed to slice stainless steel smart toaster. So ये also काफी interesting है. गाइस एक चीज चेक करके बताना मैं पब्लिक हूँ ना, क्योंकि मेरे को याद है मैंने अनलिस्ट किया हुआ था वीडियो पहले और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ पब्लिक करना बिकॉज आई हैव टू सेंड लिंक्स इन अ फ्यू प्लेसेस इन द स्टार्ट ना. वो मैं मेरे डिस्कॉर्ड में भी डाल देता हूँ. चलो अब टाइम नहीं है उसका. तो ये है. और अब है कि वेबसाइट ऑफ द फकिंग डे, यूज बर्नर ईमेल एड्रेस. और है awesome ass shit video of the day और ये रोज का एक वीडियो रेकमेंड करते हैं. So thank you Vaibhav, thank you so much. So what the fuck are cults and how do they work? ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. देखिए ये क्या है, ये देखते हैं. मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ क्योंकि साउंड मेरे को श्योर नहीं हो कि मैंने की थी. सफारी. थैंक यू गाइस. अब वीडियो देखते हैं व्हाट आर कल्ट्स एंड हाउ डू दे वर्क. CuriosityStream. Get access to my video streaming service, Nebula, when you sign up for CuriosityStream using the link in the description. When people hear the word cult, a certain image tends to burst into their brain. Brainwashed devotees worshipping a crazed narcissist and willing to sacrifice anything for them. While Jonestown, Heaven's Gate, and the Solar Temple
have given cults a violent reputation, most cults tend to keep a much lower profile. Cults are everywhere. There's probably a cult in your town, and the tricks they use to lure people in aren't complicated, but rather tried and tested social manipulation tactics that anyone can fall for. So what is a cult? How do they trap people? And how do people end up believing that volcano alien ghosts are living on their bodies? Well, let's find out. A cult can form around anything: politics, religion, business, self-improvement, therapy, hate, aliens, meditation, YouTube channels, and eco-friendly lifestyles. Cults are not solely religious, and not all new religious movements or unorthodox groups are cults. Cult does not mean religion or group I don't like, but refers to a very specific structure and characteristics. The Symbionese Liberation Army, famous for kidnapping Patty Hearst, was a political cult. Amway is a corporate cult. And the Children of God, the cult that Joaquin Phoenix was raised in, that's a religious cult. Rastafarianism, Baha'i, Wicca, those are new religious. अच्छा, so मेरे को नहीं पता था कि there are like ऐसे corporate, there are like separate terms for it, like मेरे को तो बस religious cults के बारे में पता है, जितना ऐसा अलग-अलग जगह सुना पड़ा है Da Vinci Code वगैरह में and like everywhere else, but like this seems like a proper research video, काफी सही लग रहा है. Movements, but not cults. They don't deceive people into joining, and they don't demand their followers cut off ties with non-Rastafarian friends and family. It isn't their beliefs that make a cult, it's their authoritarian structure, their deceptive recruitment, and how controlling they are. That's why cults are also called totalist groups, and why they share their structure with totalitarian. Okay, अगला वर्ड आ रहा था टोटलिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल वाली बुक में था, और जैसे कुछ कंट्रीज में होने वाला है, और जैसे शायद एक और कंट्री में होने वाला है जिसमें शायद हम रहते हैं. That's why cults are also called totalist groups, and why they share their structure with totalitarian regimes. Cults aren't about belief, they're about control. And to spot a cult, you just have to look out for these 3 characteristics. 1. A charismatic and authoritarian leader. Cult leaders always have 2 qualities: charisma and authoritarianism. A cult leader needs to have enough confidence, charm, and drive to pull people in, and they're always narcissists. Cult leaders like Jim Jones, Soko Ashihara, and Marshall Applewhite all fit at least 8 of the 9 criteria for people with narcissistic personality disorder. Their charisma and grandiose sense of self-importance attract people, but after that initial charm, their authoritarian nature and lack of empathy creates a culture of fear and terror, which keeps people in the cult. The energy that I felt from him put me into a state of almost fear and awe, because when somebody says and starts owning that he may be or kinda is a representative of the kingdom of heaven, there's kind of a energy that's exchanged between the two people. Abhinav Pathak sahi keh rahe hain, the master of none was based on one, and it was based on Scientology, right? So Scientology के ऊपर मैंने एक चलचित्र पे documentary भी recommend की थी. So yeah. It's like there's a charge that goes on. 2. Thought reform. Coercive persuasion, brainwashing, mind control, whatever you want to call it. It's a process through which ये उसका भी याद दिला रहा है मेरे को, ओशो वाला जो था वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, काफी वैसा सा है. मतलब obviously because it was a cult, right? people can change the minds and thoughts of other people without them realizing it's happening. Cults, along with other cult-like groups such as Rajat is saying there is a video game based on this, Far Cry 5. वो मेरे को पता है Far Cry के बारे में. I have never played it, but I did not know it was based on cults. Interesting. terrorist organizations, hate groups, and totalitarian movements all use thought reform. It even happens in cases of domestic abuse. Thought reform or brainwashing doesn't turn people into zombies or Manchurian candidates. There's no secret drugs or hypnosis going on. It's simply words and group pressures. We'll look at how cults use thought reform to manipulate people in a bit. 3. Exploitation.
Once a charismatic leader has indoctrinated a follower through thought reform, they can begin exploiting them economically, psychologically, politically, or sexually. He was doing so much in the community, and so why not, rather than just tithe your 20%, why not sell your home? Give the money to the church. And that is what people began to do. So how do people end up in cults? Well, people end up in cults or totalist groups in a number of different ways. Many are kidnapped or forcibly enlisted, like the estimated 20,000 children forced into Joseph Kony's Lord's Resistance Army. Once forced into these groups, their charismatic and authoritarian leaders can begin indoctrination. Or you can be born into a cult or totalitarian regime. The children raised in the Children of God cult, or North Korean citizens, didn't choose to be in the cult they're in, but both of them are exposed to the same thought reform processes and authoritarianism. Or you can be recruited into a cult. There's a common stereotype of a typical cult recruit, a seeker. Rohan is saying ki check out the Far Cry trailer. It is based on some dictator storyline. Dikhta, interesting. A slightly wacky hippie type, very into hummus and crystals, who went looking for enlightenment, found a cult, and can now assemble a Kalashnikov while doing yoga. But study after study has मैंने discovered पहली बार देखा किसी ने कलाशनिकोव बोला लाइक मैं तो क्या ही बोलता था उसको वो मतलब वो जो राइफल होती है आई डिड नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट सो आई फाइनली नो हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड इट्स कॉल्ड कलाशनिकोव that there is no personality profile for your typical terrorist or cult recruit. Any of us could become vulnerable given the right conditions, the right group, and the right time. Major life changes such as a recent move, a breakup, a death in the family, career shift, war, natural disaster, or a global pandemic can leave someone isolated. ग्लोबल पैंडेमिक कब का वीडियो है ये ओ फक ये 5 दिन पुराना वीडियो है ओ शिट मेरे बर्थडे पे आया था यार ये From their usual support structures. During these times, we all tend to look for friends, are more open to strangers, and are more willing to accept things we normally wouldn't. Usually, it's the cults that go out and look for followers. And cults This is a very good point, by the way. This just ने जो भी points बोले कि death of someone, a breakup, career shift, a pandemic, or a war. Like every time जब हमारी life में uncertainty होती है, we are very easy to influence and we are very gullible that time. So we are very easy to like woo them. So हमें कोई भी easily woo कर सकता है और that is why they attack. That is when they attack you. recruit everywhere. Lectures, seminars, retreats, going door to door. They run schools, businesses, political groups, meditation and yoga classes, weight loss programs, and therapy clinics. Most cults even have front groups set up to appeal to a wide range of interests. The Unification Church, commonly known as the Moonies, have hundreds of front groups, including academic and professional groups, dozens of businesses, and media such as the New World Encyclopedia and the Washington Times. The Church of Scientology has front groups like Sterling Management, who do corporate training, or the Narconon Drug Rehabilitation Program, or hilariously, the Cult Awareness Network is also a Scientology front group. Cults are always deceptive during recruitment. New recruits will interact with a front group unaware that it's related to a cult. There is never any mention of galactic overlords, celibacy, polygamy, suicide missions, 20-hour workdays, or forced marriages. That all comes much later. For now, it's just a group interested in bettering themselves and the world through mindfulness, or new biblical interpretations, or a public speaking workshop. Nothing to worry about. The Unification Church calls this heavenly deception. Other Bible-based cults call it giving milk before meat. It's okay to lie to new recruits because, in the end, it's for their own good. Once within reach, the new recruit will be love-bombed. Love bombing is a tactic in which cult members smother new recruits with flattery. Fuck, ये कितना खतरनाक है love bombing. I love the term. मतलब कितना कितना dystopian term है love bombing. ये वाला वापस देखते हैं बाद. In the end, it's for their own good. Once within reach, the new recruit will be love-bombed. Love bombing is a tactic in which cult members smother new recruits with flattery, praise, and affection. Love bombing is extremely effective on anyone, but especially so on people who already feel isolated and ignored. New recruits will gradually find their free time filled with group classes, meetings, dinners, and retreats.
recruits' lives are swallowed up by the group. Their entire day is filled with cult-related work assignments, studying, lectures, meditating, chanting, etc., etc. This has the added benefit of keeping the recruit awake for long periods, which affects their critical thinking abilities and simply leaves them with no time to reflect on what's actually happening. You're constantly up, you're constantly busy, and you're made to feel guilty if you take too many luxuries like sleeping. You tend to not really think for yourself, and I did allow Jones to think for me. Many cults will then begin to pressure new members to leave their family, friends, and jobs. They are holding you back. Fuck. Main Radio is an internet-based cult led by self-proclaimed philosopher Stefan Molyneux, known for its practice of encouraging its new recruits to de-foo, to reject their family of origin. This isolation tactic is common in cults to force a recruit to become dependent on the group. Removing family removes a fundamental source of emotional and financial support for people, and an important source of reality checking. Romantic relationships and friendships must also be scrutinized even within the group. This is why many cults practice either celibacy or polygamy, because it stops people from forming a close romantic bond with just one person. The only relationship they can have must be with the entire group or the leader. To replace families, many cult leaders take on familial ties. David Berg, head of the Children of God, was known as Dad or Grandpa. Elizabeth Clare, prophet of the Church Universal and Triumphant, was Mother. And Pol Pot, leader of the Khmer Rouge, was known as Brother Number 1. Many cults encourage confessing traumas either to the whole cult or with an assigned member. Before I came here, I was taking LSD, marijuana, every type of dope you can imagine. Without our Pastor Jim Jones to teach me the right way, I would not be in college right now. The cult will usually lead the recruit to exaggerate or even misremember their pasts negatively. This causes ये वाली चीज द मास्टर में थी जिन लोगों ने पॉल थॉमस एंडरसन की वो पिक्चर देखी है तो ये साइंटोलॉजी में भी होता है बेसिकली मेरे को उनका नाम नहीं पता जैसे व्हेन यू जॉइन लाइक साइंटोलॉजी तो एक बंदे को आपको अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स बताने होते हैं पर वो एज अ फ्रेंड आपसे बातें निकलवाता है and the scariest thing is that they tape recorded so they have all the recordings of that और फिर जब आप वो कल्ट छोड़ने की बात करते हो मान लो कभी आपको अकल आ जाती है फक ये तो मतलब कुछ तो यहाँ गलत हो रहा है then they blackmail you using those recordings कि हमारे पास आपकी ये वाली recordings है guilt and anxiety about their former personal connections and past. They were bad people before they joined the group, and the group is the only way they can become better people. In my last lifetime, I lived during World War II, and I was a French prostitute that had taken up with a German officer just to protect my butt. The French resistance found out about me, and they threw me and all my belongings out in the street. And the mob that mobbed me and shaved my head there is the reason why I was so afraid of crowds now. The group will position itself as the only sanctuary in which these feelings can be expressed. So now the follower will seek more comfort from the group, even though it's the group that's causing their discomfort. Everyone is constantly confessing things to the cult. Sharing anything to one member of the cult means sharing it to everyone. So privacy does not exist. They cannot share doubts or complaints or tell anyone if they are being abused. The lack of free time, the sleep deprivation, and the complete destruction of individuality means that there is no time for self-reflection. Recruits suffer from a triple isolation, from friends and family, from other cult members, and from their own mind. As the follower grows more isolated, they begin to rely on approval from the cult, and this is where human weakness to peer pressure can be used against them. Even when a cult member has doubts, they are made to feel that they are wrong. When they look around, they see only happy, believing followers. No one expresses any doubt, and so when a follower feels doubt, they feel alone and wrong. It is them that must work harder to understand the group or the... Yes, it's called auditing. Webber Singh in comments is right. Auditing word tha Scientology wala. Leader is never wrong. I'd look around and I'd say, am I the only one that feels this way? I learned eventually not to say anything to anyone. In a cult, you are rewarded for good behavior with praise and privileges, but those that behave in the wrong way are shunned and punished.
So as the cult is isolating you from your ordinary reality, they provide you with a new and unanimously approved worldview. Now an all or nothing point of view begins to be preached. गाइस एक सेकंड ना, मेरा फोन बंद हो गया। मेरे को अपनी चीज़ों एक उसमें नए में खोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। ये दिस इज मी, आई एम लाइव। One second. The cult is isolated. Yeah. So हाँ, ये देखो देखो। They teach that every single word is completely true or none of it is. If you have any doubts, you will be excluded and you will suffer. The way that these ideas are told also matters. Every cult or totalitarian system has its own loaded language. Scientology, for example, uses terms like reactive mind, suppressive person, and case gain. Loaded language prevents followers from expressing anything outside the cult's ideology. New, vague words that can stand for anything are used without the things themselves actually being discussed. Why listen to your family telling you you're in a cult when they're suppressive people, and you know suppressive people shouldn't be listened to? All kinds of horrible names are given to non-cult members. Systemites, unclean, or satanic, for example. This creates an us versus them mindset. Now any criticism of the cult is seen as an attack. You are in the cult or you are an enemy. There is no in between. Now their whole existence is the group. If they leave, they are nothing. And joining the outside world is seen as a very idea. Many cults preach that anyone that leaves will probably die or be living on the streets in no time. Here the cult's control becomes total, allowing no other beliefs and no other affiliations. This is why cults are called totalist groups. They consume every aspect of the follower's life. While an average Christian, Buddhist or Muslim can enjoy astrology, attend yoga classes, and like and subscribe to the Cogito YouTube channel, someone this far into a cult has nothing outside of it. All activities, relationships, and beliefs revolve around the cult. The deeper you go towards the center, ये काइंड ऑफ वो वाली चीज भी तो हो गई, भक्त। आई थिंक सो, मतलब भक्त जो होते हैं कुछ, वो भी तो ऐसे ऑपरेट करते हैं ये, क्योंकि दिस इज आल्सो सिमिलर टू दैट थिंग कि या कि बेसिकली जब जो लोग फ्लैट अर्थ सोसाइटी में बिलीव करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इट्स देयर ओनली होम देन, मतलब उसके अलावा वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। तो yeah. The cult, the more distant from reality you start to become. The beliefs revealed to the inner circles of the cult are sometimes so extreme that the outer circles must be protected from it until they are ready. For example, in Scientology, the public and new recruits were protected from the most extreme ideas, like that of the dictator of the Galactic Confederacy, Xenu, and of alien souls bursting forth from volcanoes and jumping onto human bodies. The public only found out about this story after it was leaked by ex-cult members, journalists, and the internet. Once a follower has reached a stage where the cult's ideology has totally consumed them, they'll believe and do anything. Followers can now be exploited and deployed. In most cases, cult members end up losing a few years of their lives, going broke, or ending up with too many supplement pills that they can't sell. But cults can take an unfortunately dangerous route sometimes, which is why it's important to spot a cult's characteristics and the methods they use to isolate and control people. And that's a basic introduction to cults. It isn't even close to covering everything. There's a lot of debate around this topic. One video simply can't cover everything. This was just a primer so that when we start making videos about specific cults, you'll know what we're talking about. Cults can be very dangerous and should always be avoided. So instead of joining a cult, why not join Curiosity Stream? अभी अपनी प्रमोशन करेंगे और अब हम वीडियो बंद करेंगे। But yes, great. I will subscribe to this channel. This is a nice channel, guys. We should subscribe to them. Cogito. क्या क्या बनाया है इन्होंने? मोस्ट व्यू देखते क्या है? मुझे बहुत पसंद आया ये चैनल। सबसे ज्यादा इनका फेमस वीडियो व्हाट इज हिंदुइज्म, फिर है व्हाट इज बुद्धिज्म, व्हाट इज सिखिज्म, व्हाट इज ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, कुछ तो है ये। Why are Indian China so populated? Why who are the Berbers of North Africa?
व्हाट इज जैनिज्म भाई, ये देखेंगे हम। मेरे को बहुत लाइक मतलब आई शुड नो अबाउट इट, बट मेरे को भी बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जैनिज्म के बारे में पता है। तो या द हिस्ट्री ऑफ कॉफी, दिस इज अ ग्रेट चैनल गाइस। What is the difference between an Arab and a Muslim? A very good question. Yeah, the history of tea. Who is Ashoka? किसी इंडियन का है कि चैनल? The Secret of, नहीं नहीं, वो आवाज तो अंग्रेज की है किसी। The Secret of Climate Change। मतलब ये दो तीन चैनल्स का मिक्सचर लग रहा है मेरे को। लाइक देयर इज दिस चैनल कॉल्ड इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, और एक और चैनल है जो वर्ल्ड वॉर वगैरह पे। जैसे एक चैनल है, आप लोगों को दिखाता हूँ, उस चैनल को हम किसी दिन ढंग से भी एक्सप्लोर करेंगे। उस चैनल का नाम है वर्ल्ड वॉर टू एक्सप्लेन। मैंने बेस्ट वीडियोस देखे हैं वॉर पे उस चैनल पे एक्सप्लेन। यस, ओवर सिंप्लीफाइड, इट्स अ ग्रेट फकिंग चैनल। और इस बंदे ने बहुत कम वीडियोस डाले। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 3 4, मतलब 25 के अराउंड, 20 25 वीडियोस है इसके चैनल पे। बट इट्स अ ग्रेट चैनल। संकेत एंड कमेंट से सिंह, पारसी पीपल फॉलो जोरोआस्ट्रियनिज्म। ओके, आई डिड नॉट नो दिस, थैंक यू संकेत। हम फिर एक दिन बैठ के ओवर सिंप्लीफाइड के भी वीडियोस देखेंगे। ये तो भाई मेरे को बहुत पसंद है। मेरा सारा, मेरे को आज तक पता नहीं था कोल्ड वॉर में हुआ क्या है एग्जैक्टली exactly। मेरे को ऊपर ऊपर से पता था व्हाई कोल्ड वॉर इज कोल्ड वॉर, बट आफ्टर वाचिंग दीज वीडियोस, लाइक हम साथ में बैठ के देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू ओवर सिंप्लीफाइड पार्ट 1 पार्ट 2। लाइक दीज आर सम ऑफ द बेस्ट वीडियोस। नाउ लेट्स गो बैक टू फकिंग होम पेज। तो इस पे आप जाके ना किसी भी रैंडम पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, एंड इट टेल्स यू लाइक कुछ भी रैंडम। जैसे अभी तो 27 जुलाई 2020 है, राइट? अब मैंने क्लिक किया रैंडम पे, March 10 2013, तो March 10 को इसने ये चीजें रेकमेंड की थी। डोंट कंफ्यूज कंफर्ट विद हैप्पीनेस, पर्सन ऑफ द फकिंग डे, बैडास लेड द स्लेव अपराइजिंग। सो अब ये किसी बैडास की फोटो दिखाएंगे। ओके, या स्पार्टकस। तो ऐसे एक एक चीज थोड़ा आज गाइस, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा लॉस्ट हूँ, तो बिकॉज मेरा ये सिस्टम नया है, ये लैपटॉप नया है, तो मैं इस पे मतलब अभी माउस नहीं है मेरे साइड में, माउस पड़ा है और इसमें वो USB-C वाली चीज़ है ना, तो आई हैव ऑर्डर्ड दी अडेप्टर। तो अभी मैं बहुत टाइम बाद सब कुछ ट्रैक पैड के थ्रू कर रहा हूँ, एंड लाइक स्टिल फिगरिंग अ फ्यू थिंग्स आउट। देयर इज अ वेरी गुड चांस द नेक्स्ट स्ट्रीम दैट आई विल डू विल बी यूजिंग OBS, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में OBS यूज करके 1 2 स्ट्रीम किए थे। तो मेरी जो यहाँ पे साइड में छोटी सी फोटो आती है, मैं उसको भी फिर बड़ा कर सकता हूँ। OBS के थ्रू फायदे तो बहुत है। हम OBS वाला करके देखेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट ये हो गया, एजुकेट योर इग्नोरेंट एज 12 events that could fuck shit up, fucking mind blowing, look how the brain is fucked up. Useful shit of the day, make some leather shit. Website of the day, store your password, awesome as shit. What, when is the goddamn future? Sweet ass picture of the day। हाँ, तो पहले एक और इसमें ये फीचर होता था, स्वीट एस पिक्चर ऑफ द डे, जैसे मदरफकिंग तापिर। ये क्या बोल गया वैसे। अब जैसे ये वाली स्वीट एस पिक्चर खोलते हैं, हाँ इनगोर की है ना, ये खोलेंगे। बट ग्रेट वेबसाइट, तो ऐसे अलग अलग जगहों की फोटो होती है, कितनी प्यारी पिक्चर है। आयरलैंड में जगह है, आयरलैंड चलते हैं गाइस। Weird ways assholes used to get stoned। एक वीडियो है ये, कन्वर्ट यूट्यूब वीडियोस इनटू MP3। ये तो सबको आता ही होगा, इसमें क्या है। यूजफुल शिट ऑफ द गॉडडैम डे बिकॉज यू आर तो ये आपको बहुत पेट्रोनाइज करके इतनी चीजें दिखाता है दैट लाइक आई रियली लाइक दिस वेबसाइट। इट्स कॉल्ड fuckinghomepage.com। अब है April 4 2013। Whenever you hate something, it hates you back. Don't fuck with a woman's children, person of the day।
Educate your ass, hack the shit out of your traveling, mind-blowing book of the day, don't be ignorant son of a bitch. स्पेन की फोटो बेसिक है ये तो. Come on guys. Hackers aren't always douchebags. ये काफी cool लग रहा है. Hackers are not always. Amazon Fire review. ये तो कहाँ redirect करती है? बट हाँ, तो ये थी मेरी आज की रिकमेंडेशन, फकिंग होम पेज. आप देखो इसके सारे ये लिंक्स. एक लास्ट देख लेते हैं. ये 2013 ही क्यों दिखा रहा है भाई, कुछ और भी दिखा. 2013 नहीं, अब 2013 आएगा तो मैं देखूंगा ही नहीं. फक, इनके एल्गोरिदम में मेरे को लगता है कुछ फकअप हुआ है. वो भी फेब 2013, मार्च, फेब और मार्च ही दिखा रहा है. वापस मार्च. The random post is not so random basically. जैन आया, हम इसके एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे, वापस वेब आ गया. मार्च. नाइस. एलिस टोबैक होस्टिंग सीबीसी टेलीविजन शो. इमगुर भी काफी सही है, ये मैंने इस पे यूज किया बेसिकली. लाइक एवरी टाइम रेडिट चलाते हो तो यही आती है. बाकी तो क्या है गाइस, गाना रिकमेंड करो आप लोगों को एक. आई नो मेरा काम नहीं है बट फक इट यार, कुछ भी कर सकता हूँ मैं तेरे को. I've been listening to this song a lot. It's called HYOB का song है, Panama. मैं बजाऊंगा नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा. बट ये गाना सुनो. मैं पिछले एक दिन से ये गाना सुन रहा हूँ. एंड जिन लोगों को टिक चिक थोड़ा पसंद है तो वो पसंद आएगा. बट इट्स अ वेरी गुड ग्रूवी सॉन्ग एंड विद वोकल्स एंड एवरीथिंग. एंड बहुत रेयरली होता है मेरे को वोकल्स के साथ चीज़ें पसंद आती है. सो यस, ये मिक्सचर ऑफ रिकमेंडेशंस थी. तो गाइज लाइक आई कैन अश्योर यू, धीरे धीरे अब हमारी स्ट्रीमिंग क्वालिटी बेटर होती जाएगी. मैंने एक लाइट भी ऑर्डर की है अब, और मैंने यूएसबी पोर्ट ऑर्डर किया है. और मैंने यूएसबी पोर्ट और यूएसबी जो अडेप्टर है. और अभी तो जैसे मैं टेबल लैंप को फेस पे लगाता हूँ, अगर टेबल लैंप नहीं लगाऊँ तो इतनी लाइट है मेरे कमरे में, तो वो पीछे वाली बंद करनी पड़ती है, नहीं तो वो बर्न होता है. सो ये हो गया. व्हाट एल्स. बट दिस इज अ ग्रेट लैपटॉप. मतलब मैकबुक है तो वैसे फील तो आ रही है काफ़ी, बट आई एम श्योर आई विल गेट अ हैंग ऑफ इट. एंड आई एम एंजॉइंग दिस अ लॉट. विवेक सिंह भाई गर्लफ्रेंड रिव्यू की चैनल देख ले, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाता है. विवेक ये क्या है, मेरे को बताओ इसके बारे में. लाइक इफ यू आर नॉट जोकिंग, गर्लफ्रेंड रिव्यू मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की लग रहा है. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले बताना पड़ेगा. इसके अलावा क्या अपडेट्स है मेरे पास. यही है गाइस. लाइक आई एम स्टिल नॉट श्योर मैं जयपुर में कब तक स्टक रहूँगा, बिकॉज पैंडेमिक. देखिए एक बार स्टैट्स देखें कोविड के, देख ही लेते हैं गाइस, थोड़ा आइडिया लगाता है. कोविड, मेरा हाथ बार बार माउस पे जा रहा है और वो चलता नहीं है. एक सेकेंड, कोविड के स्टैट्स देखते हैं. कोविड-19 ये वेबसाइट बहुत पसंद है मेरे को. नीचे तो जा रहा है ग्राफ, वो नहीं. अच्छा, सब कुछ ऊपर जा रहा है. लास्ट 2 वीक्स. ओके, एक ये ग्राफ जैसे ऊपर जा रहा है और एक चलचित्र का जैसे जा रहा है, सेम सही है. एक्टिव केसेस काफी कम हो गए. महाराष्ट्र का देखते हैं क्या करेगा. भाई घर जाना है मेरे को, वापस कम हो जा साले. डेली, हाँ डेली में आती है बात, समझ. डेली देखो. अरे यार कल वापस बढ़ गया. अरे ये तो नागपुर है, मुंबई दिखा तू हमें.
हजार 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 मुंबई में रोज के हजार आ रहे हैं। तो विवेक सिंह कुछ रिस्की नहीं है भाई, काफी पारिवारिक वीडियो बनाता है। एक्चुअली दे रिव्यू गेम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड दे डू इट इन अ वेरी फनी वे। तो विवेक नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, हम पक्का खोलेंगे। मैं हर हफ्ते एक योर रिकमेंडेशन वाली चीज करता हूँ, तो उसमें वील डेफिनेटली डू इट। मेरे राजस्थान में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं यार। भाई साहब एक सेकेंड, तुम क्या बात कर रहे हो? राजस्थान में हजारा क्या क्या कहते हैं, बराबर हो गए उसके महाराष्ट्र के? तो क्या बात कर रहे हो यार? जयपुर देखते हैं ना। कम आई कांट कंपेयर जयपुर। Thank you so much, Vivek. Rajshri is saying, please suggest similar movies like No Country for Old Men. Really like your recommendations. यार guys, मैं इन streams में movies recommend नहीं करता. One of the reasons why I'm streaming is because I don't want to recommend stuff. जयपुर, हाँ हाँ, तो जयपुर के कितने हैं? 80 केसेस आए हैं। कल 80 70, मतलब काफी बॉम्बे से तो कम है। दिल्ली भी देख लेते हैं, दिल्ली को क्यों छोड़ना। दिल्ली में भी मैंने सुना कम तो हो रहा है थोड़ा। दिल्ली में देखो कम हो रहा है भाई। दिल्ली में तो पीक नीचे चला गया यार, सही में चला गया। लास्ट 1 मंथ का देखो, दिल्ली में तो 613 केसेस ही थे भाई। सही है सही है सही है, काफी सही। तो हाँ, ऐसे ही मैंने चला लिया ये। बट यही है गाइस, अभी मेरे को कुछ करना था। मेरे को एक पिक्चर देखनी है, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की। इट्स कॉल्ड वेदरिंग विद यू, माकोटो शिनकाई की। बहुत टाइम से मेरे पास पड़ी थी, मैंने अभी तक देखी नहीं है। So I will watch it and thank you for joining, guys. Not at all is saying, hey bro, see something cheerful, it is too depressing. यार मैं cheerful ही देख रहा था इसलिए, वो थोड़ा educational था इससे पहले जो देख रहा था। cheerful भी देखेंगे अपन, कल मिलते हैं। अभी मेरे को जाना है, बट मजा है यार, मेरा मूड बेटर हो गया स्ट्रीम करके। आई थिंक स्ट्रीम रोज रात को करना ही चाहिए एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। बाय द वे गाइस, अब हम लोग डिस्कॉर्ड पे भी आ गए, तो आप लोगों को अगर discussions वगैरह करने हैं, so you guys can join us on Discord and it's really nice. So right now I'll take a leave. I'll see you guys soon and thank you so much guys. Bye.